Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 5th of February. In this session students, we will be talking about the Bharat Mobility Global Expo. Then we will be talking about India's White Tiger Breeding Center that has been established in Madhya Pradesh. Next thing, we will be talking about India's first artificial intelligence university that will be coming up in Maharashtra. Next, we will be talking about the Forbes 10 most powerful countries in the world. All these things will be very important and beneficial for your competitive exams. We will be discussing all of them and many more in this video, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning, weekly current affairs, monthly current affairs, and topic wise. They are uploaded regularly to help you prepare better for the competitive exams. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. Also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Students, let's start with national affairs. Recently, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Bharat Mobility Global Expo 2025. It will be from 17th to 22nd. It was from 17th to 22nd of January 2025. Right? This India's largest mobility expo in India was held where what is the location at Bharat Mandapam, that is in New Delhi. Also, it has become the world's second largest automotive expo. Right, this expo held from 17th to 22nd of January, and it was held across, as I mentioned initially, it was Bharat Mandapam, the main center. Right, apart from this, Yashobhumi, right, and your India Expo Center and Mart, that is in Greater Noida. Then there was a theme for this that I want you all to remember, and the theme is important: beyond boundaries, co-creating future automotive value chain. Question can be asked here is that what was the theme for the Bharat Mobility Global Expo that was held at Bharat Mandapam, right? The main event was held at Bharat Mandapam. Correct. Apart from this, Pune, Maharashtra based Wave Mobility Private Limited has launched India's first solar powered electric vehicle that has been named as Wave EVA. Correct, take a note of this, right? Wave Mobility, right? And they launched the first solar powered electric vehicle named Wave EVA, that is your electric vehicle, right? This was launched at the Bharat Mobility Global Expo, and it has been launched in 3 variants, that is Nova, Stella and Vega, and this newly launched electric vehicle is priced between 3.25 to 6 lakh rupees. Correct. Then this Bharat Mobility Global Expo will bring together the entire value chain of mobility sector, from automobile manufacturing to components, electronic parts, tire, energy storage makers and many more. Then next is your EKA Mobility. They have launched EKA Coach, that is India's first fully sustainable steel luxury electric bus, right? And as I mentioned, it is India's first fully stainless steel luxury electric bus, and it has been launched for long distance travel by the name EKA Coach. Next is CZA. They have approved the proposal to set up India's White Tiger Breeding Center, and this will be established where? In Madhya Pradesh, right? Take a note of this. So this CZA, that is your Central Zoo Authority, it is New Delhi based. This comes under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and they have approved the proposal to set up India's first White Tiger Breeding Center. This will be where? It will be in the Rewa district
of Madhya Pradesh. Right, this approval come after the 114th meeting there of the CZA that was held in December 2024. Correct, and this new white tiger breeding facility will be developed as a part of the revised master plan of Maharaja Martan Singh Jodiot White Tiger Safari and Zoo that is in Satna, Madhya Pradesh. Correct, take a note of this. Next, remember here, according to the tiger census of 2022, Madhya Pradesh has the highest number of tigers, followed by Karnataka, Uttarakhand, and Maharashtra respectively. And in 2016, the world's first tiger safari was also established at Mukundpur in Satna district of Madhya Pradesh in 2016. Right? Take a note of this. Right, and this, remember, we are talking specifically for the white tigers here. Right, this is a subspecies of tiger only, and it is a color variant of the Bengal tiger. Moving on. Next is Maharashtra to set up India's first artificial intelligence university. We are seeing that AI demand is growing. We saw the launch of OpenAI, right, and they launched ChatGPT, because of which all the artificial intelligence hype was created. Now we are seeing Deep Seek, right? Now apart from this was launched by China, right? Then we are seeing multiple models that are coming, and it is saying that in the future AI agents will be the one who will be working for us, right? And it will be a revolution that we will be seeing ahead. Correct, and so India don't want to be lag behind in this race, and India also wants to capture the market here. Also, we want to provide skills to the youth today, right? As if we will be skilled enough, we will be able to get better job opportunities. Even with the skills, we will be seeing new use cases of it, new startups, new entrepreneurs that will be emerging once they are provided with the right skills. Correct. So for the same aim here, Maharashtra is set to set up India's first artificial intelligence university and to become a center of excellence for artificial intelligence, for their education, for skilling, for innovation, to come up with various use cases, to promote research and development in AI and in the related sector. Here, for the same reason, you can see a task force has been established, right, that will be chaired by Parag Jain, right? He is the principal secretary of IT of the government of Maharashtra, and this task force is designed to be a collaborative effort, bringing together expertise from various academia, that is with various institutions, with various industry partners, with the government, to create an institution that will focus solely on AI education, research, innovation, and development. Correct? Take a note of this. Moving on. Next, Forbes top 10 most powerful countries in the world list has been released for 2025, and this USA has secured the top position, right? We are talking about the most powerful countries here. This list released by which organization? It has been released by Forbes, right? Who secured the first position? It is USA that secured the top position with a GDP of $30.34 trillion. This was followed by China on second position with a GDP of $19.53 trillion. On third position was Russia with a GDP of $2.2 trillion. In this index, our country India was on the 12th position, right? Take a note of this. We were at the 12th position with a GDP of $4.27 trillion, right? This is the powerful country list, right? But if we talk about the GDP terms, right, in terms of the global GDP, in terms of the GDP, our country is on the 5th position, right, in terms of GDP. But if we are talking about the most powerful countries, India was on the 12th spot. Let me also give you a better idea here. You can see first America, second China, third Russia, fourth England, fifth Germany, sixth South Korea, seventh France, eighth Japan, ninth Saudi Arabia, 10th Israel, and our country was on 12th position. Right, moving on. Here you can see further a breakdown of the data. Moving on. Next is India tops global list in passenger loads on domestic flights as per the data released by IATA. First of all, what is this IATA? It is your International Air Transport Association, right? It is Montreal, Canada based organization, and they have released a data about the international market performance data, right? It is talking about the passenger load. That means which country is seeing the maximum flights, right? Where the passengers are traveling most,
or from which country to which country the more people are traveling, right? So here in this data, it is showing a record high demand for air travel, right? As we know, air travel makes it easy to connect two location with less amount of time, right? It is the mode of transport which will basically is the or we can say it is the best transport where we are seeing the least amount of time that is utilized. Even now, students, in the future you will be seeing that SpaceX is coming with such technologies that will transport or that will help us to travel from, say, between Delhi to London in just 1 hour or 2 hour only, right? That will be faster rocket, that will be a space travel, that will be a different kind of story itself, correct? But coming back, if we talk about this data, we are seeing that the air travel is increasing, and the India's domestic flights, they have recorded a passenger load factor of 86.4% in 2024, that is down by 0.6 compared to 2023, and it is the highest among all the domestic market. So here we can see it is our country India has surpassed USA with 84.1% and China with 83.2%, as India is having 86.4% of PLF, that is passenger load factor. Right, as per the Directorate General of Civil Aviation, the aviation sector in India witnessed 163 million passengers boarding domestic flights in 2024. Also, the report revealed that the domestic full year demand reached record high in terms of passenger numbers and load factor, and domestic full year traffic for 2024 increased 5.7% compared to last year, and while the capacity increased by 2.5%. Right, and we saw this data was released by IATA, headquarter of which is in Montreal, Canada. Moving on. Next, remember, recently some countries have officially withdrawn from ECOWAS, ECOWAS. Now, what is this? This is your Economic Community of West African States, right? That is ECOWAS. So recently, Mali, Burkina Faso and Niger, these are the three African countries that have exited from this Economic Community of West African States. Right, this split occurred after the three departing countries rejected the ECOWAS demand to resolve the civilian rule there. And here ECOWAS, they have advised their remaining 12 members to keep recognizing the passport of these three countries and continue trade with them until further instructions are given. Right. Also remember these three countries, right? They said that last year in Jan 2024 that they will be exiting the ECOWAS, and now they have officially exited it. This ECOWAS, basically it is a political and economic alliance of the West African nations that was established in 1975 through a Treaty of Lagos to enhance the regional economic integration, and as of now there are 12 members of it. Next students, we are talking about Gujarat's Chief Minister Bhupendra Singh Patel. Right, he has launched a Sensex FNO contracts on India INX at GIFT City. I repeat, Bhupendra Patel, right, he has launched the Sensex FNO contract on India INX at GIFT City. India INX, that is your India International Exchange, correct? Here remember, India's first international stock exchange platform and subsidiary of Bombay Stock Exchange at Gujarat GIFT City, it has been launched here. This new offering will allow the international investors to trade and settle the BSE derivatives in US dollars, facilitating greater participation from global traders and investors. Also, this will also enable the global investors to trade India's benchmark equity index without currency conversion risk. Also, the contracts will trade for 22 hours per day, which is in alignment with the global markets and expanding access to Indian equities through tax-friendly regime of GIFT City. Here the foreign investors will include NRIs, and they can also participate in this new product offering without the requirement of an Indian tax identification number, that is your PAN number. Next is RBI. They have imposed penalties on ESFBL, that is your Equitas Small Finance Bank, right, and IPPB, that is Indian Post Payment Bank. So RBI imposed penalties on them for regulatory non-compliance. On Equitas Small Finance Bank, a penalty of 65 lakh rupees were imposed, and on IPPB, a penalty of 26.7 lakh rupees was imposed. Right. One more, remember, RBI has also imposed a penalty on Chennai-based Aptus Finance India Private Limited, and it was for 3.1 lakh rupees. Moving on, next is SEBI. SEBI has proposed the new combo product, that is mutual fund with TLI. Mutual fund with TLI. TLI is your term life
insurance. So recently, SEBI they have recently announced a new financial product that will combine the mutual funds with term life insurance, and this announcement was made by SEBI chairperson Madhabi Puri Buck, and here we will be seeing a better SIP inflow in the rural areas with this. Also, this product will enable the customers to combine their life insurance with mutual fund investment, offering an affordable and appealing solution that promotes financial inclusion in the underserved region. Next is CRISIL. They have released a report about the India's GDP growth. It stated that India will be growing at 6.5% in FY26, right? And CAD, that is your current account deficit, to widen by 1.3%, right? So coming back, CRISIL, that is the former Credit Rating and Information Service of India Limited, they have released recently a report stating about the GDP growth in FY26 at 6.5%, and on the external front, India's current account deficit is expected to widen from 1% to 1.3%. 1% is in FY25 and it is expected to widen to 1.3% in FY26, and this is because of the various headwinds and the trade war that we are seeing that USA has established with various other countries, say for Canada, Mexico and China. Right? Take a note of it. Apart from this, if we talk about CRISIL, who is the managing director of CRISIL? Subodh Rai, headquartered in Mumbai, Maharashtra, established in 1987. Also, this decline will be possible, or this basically, if we are seeing that right now, $1 has closed 87 rupees mark, right, which is highest ever, and it is expected further that we can see it can go down to 90 rupees a dollar also. Moving on. Next is T-Hub and ITFA. They have signed a memorandum of understanding to boost the India-Turkey trade and cultural ties. T-Hub, that is your technology hub, right? It is Hyderabad, Telangana-based startup incubator technology hub. They have signed this MOU with ITFA, that is Indo-Turkey Friendship Association. This was during an event that was held in Hyderabad, Telangana only, and this MOU will be seeing to boost the innovation ecosystem in both the countries, right? Here we will be seeing various initiatives. New technologies will be talked about: AI, machine learning, cloud computing, right? And the upcoming technologies will be talked about here, and how can we use it to save or grow the renewable energy sector. Say, how can we increase the agriculture front of it? How can we increase and make our environment clean with using these technologies? Also, this MOU will focus on health, food security, logistics, supply chain management, agriculture, textile, machinery, and many more. Right? Very important, students. Next, one more thing, remember, in 2024, between India and Turkey, the bilateral trade has crossed $13 billion mark. Next is awards and recognition. We are talking about the 40th edition of the Mrs. World's title 2025. And as you can see her in the picture, she is from South Africa, Shiogo Gelia, right? And she has become the 40th Mrs. World title, correct? Or she has won the Mrs. World title for 2025, right? This is the 40th edition of it, correct? With this, she became the first black women or first black South African women to win this title. This grand finale was held at Las Vegas in USA. And here, remember, on second was Sri Lanka's runner-up, that is Ishadi Amanda. Very important. Next is Flemish nationalist Bart Albert Leon de Wever has sworn in as the new Prime Minister of Belgium. I repeat, Flemish nationalist Bart Albert Leon de Wever sworn in as the new Prime Minister of Belgium. Direct question will be asked. He will be succeeding whom? He will be succeeding Alexander De Croo. Moving on. Next is science and technology. Indian Railways has launched SwaRail super application for beta testing, right? Then what is the name of the application? It is SwaRail. Launched by which organization? Launched by the ministry, that is Ministry of Railways, and it will be a one-stop solution for all the services related to Indian Railways. It was developed by CRIS. CRIS, it is your Center for Railway Information Systems. This will help us to improve the digital infrastructure, provide convenient access to a wide range of railway related services to the customer, and it will be available both on Apple App Store and Google Play Store. Next, students, we are discussing about the environment. Researchers has discovered 2 new green cardamom species in Western Ghats.
So two new cardamom species has been discovered. What are the name? That is Alteria facifera and Alteria tulipifera. Right? These are the two species of the cardamom that has been recently discovered in Western Ghats of Kerala region specifically. Next is related to obituary students. Naveen Chawla, the former CEC, has recently passed away. That is your Chief Election Commissioner. He passed away at the age of 79 in New Delhi, born in 1945. He was a 1969 batch IAS officer of Arunachal Pradesh cadre of Goa, Mizoram and Union Territory cadre. Right? And he recently passed away. Next is related to important day students. World Cancer Day, it is observed on 4th of Feb, and it is to basically raise awareness of the fundamental cancer issues and promote efforts in prevention, detection and treatment. There is a theme here that is united by unique. This is the theme for this day, and here you can see pink ribbon, right? This is the symbol for the cancer awareness. First ever World Cancer Day was observed on 4th of Feb in the year 2000. So students, that's all for the day. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Next is Ministry of Defence and Bharat Dynamics Limited. They have signed a contract worth 2,960 crore rupees for MRSAM. MRSAM, it is your medium range surface to air missile. Correct? So Ministry of Defence, they signed this amount of contract with BDL. Correct, and it will be for the Indian Navy. The contract was signed by Ministry of Defence and BDL officers in the presence of Rajesh Kumar Singh, the Defence Secretary of the Ministry of Defence. Here you can see this MRSAM. It is a system developed by DRDO and Israel Aerospace Industries in their partnership together, and you will be seeing here multiple MSMEs also took part in the production of it. It will be installed on various Indian naval ships and integrated into the upcoming naval platform. Moving on. Next is Government of India. They have reconstituted AEC. What is AEC? AEC is your Atomic Energy Commission. So our government, what they are is doing is, we know that these atomic energy, right? It is quite clean energy, right? And now with new advancement, right, we are also seeing the progress in this sector, correct? And it can provide electricity in a very large amount. Correct. So Government of India, they have constituted this Atomic Energy Commission with Ajit Kumar Mohanty as their new chairman. Take a note of this. Correct. Here you can see this AEC. It was initially established in 1948, and AEC is mainly responsible for policies related to atomic energy and ensure the implementation through it. Right. Who is the new chairman? Ajit Kumar Mohanty. Headquarter will be in Mumbai, Maharashtra. Correct. Take a note of this. Next is our MEITY, that is Ministry of Electronics and Information Technology. Its Secretary S. Krishnan has introduced the second edition of the Cyber Security Grand Challenge. This initiative is implemented by Data Security Council of India based on Noida, UP, and this is to boost the cyber security capabilities and also to prepare ourselves for the digital future that we are heading towards, right? We are seeing artificial intelligence. We are seeing the quantum chip that was recently launched by Google and that was making noise, that is Willow. It is expected that this Willow is so advanced and its computation power is so strong at quantum level that it can also break the security features of Bitcoin, right? So let's see what this goes. But Willow, you need to understand, quantum chip that was launched by Google, it is making rounds, right? So now we need more security in the digital sector. As you are seeing more and more advancement here, more and more security is required. So our ministry has recently, correct, they have introduced the second edition of this Cyber Security Grand Challenge, and here what you will be seeing is, as it is a challenge, multiple teams will be participating here, right? Almost 36 startups are expected to participate here. Multiple winners will be provided with different prizes, even monetary as well as the mentorship will be provided here, and then they will be carried further. Next is CDOT. They have partnered with IIT Delhi to develop the THZ communication front ends for the 6G technology. See, basic understanding you need to have is that this 6G technology will be very fast internet. The internet transfer, like for example, now you download a movie or when you buy a Wi-Fi, your provider says, sir, we provide 40 GB, 40 Mbps speed, or we provide 100 Mbps speed or 200 Mbps speed, right? So if we see 6G, we will be seeing in GBs, like 1 Gbps or 2 Gbps, 4 Gbps, 10 Gbps. Such kind of speeds will be provided through internet. Such type of technology will be used for advanced technologies, right? For data communication, for weather satellite
communication, right? We are talking about going to Mars. In that, it might be utilized a lot for transfer of data, right? So this is a game changer technology, and in order to work towards it, CDOT partnered with IIT Delhi to develop this THZ communication front ends for 6G technology, right? If we talk about this THD, it is your terahertz, correct? So CDOT, that is a telecom research and development center under the Department of Telecommunication. They partnered with IIT Delhi for building blocks for the terahertz communication front ends for sixth generation of technology. You will be seeing this project aims to develop essential devices and components for terahertz system, which are critical for the 6G communication network required. Next is China. They have built the world's first 300 megawatt CAES plant connected to grid at full capacity, right? So this is Nangchu 1, right? Take a note of this. Name is important. Nangchu 1, the world's first 300 megawatt compressed air energy storage demonstration project that was fully connected to the grid in China's Hubei province. It is the world's first full green non-supplementary combustion project invested and individually developed by China Energy Engineering Group Corporation Limited. Next, RBI, they have decided to conduct daily VRR operations to boost banking liquidity and deficit. Banking liquidity and deficit. See, first of all, you need to understand there are two terms. One is your VRR and other is your CRR. VRR is your variable repo rate. CRR is your cash reserve ratio, right? VRR basically means to infuse the short-term liquidity into the banking system, right? In this process, RBI allows the bank to borrow at rate determined by the market generally, that is lower than the repo rate maximum for a period of 14 days. If we talk about CRR, here RBI has mandated to all the commercial banks in India to maintain certain percentage of the total deposit in the form of cash, that is your cash reserve ratio. So RBI has decided to conduct daily VRR operation to boost banking liquidity and deficit. We are seeing in India is that the foreign direct investment is getting low. We are seeing the foreign institutional investors, they are pulling out money from the stock market. We are seeing that the value of rupee is depreciating, right? $1 is close to 86.64 rupees now, right? So we are seeing there is a decrease in the dollar. We are seeing that the manufacturing is just grow by almost 2 to 3%, right? We are seeing that now a very geopolitical important in the event is coming up on 20th of January, that is the Donald Trump will be taking oath, right? And now he will be the president of USA. With this, we can see huge geopolitical changes, right? Huge decisions are being taken by Trump. That is a separate discussion for a separate video, but you need to understand that in coming days, various policies will be coming up. Also, now you will be seeing is that the 8 pay commission has been announced by the government that from 1st of January 2026, the pay commission, 8 pay commission will be implemented, and it will be very good news for all the government students, right? Or government officials. With this, you also will be getting motivation students. Now all the government employees, right? If you become a government employee, your salary will be quite high. You will be also earning huge amount of money, right? So in that sense, instead of if we talk about security, it is there, but apart from this will also be a very beneficial thing, right? If it is implemented from 1st of January, right? Further details will be discussed later when proper finance commission will be set up and report will be released. Moving on, in order to, and now coming back to this, to boost liquidity, right? So we are seeing all these problems. So in order to boost liquidity into the banking system, right, so that the banks can provide more loans to the individuals so that they can take loans and survive in the market or do development projects and so on. Correct? Next is, here you can see these terms. Next, what is the need to introduce daily VRR? We just saw that according to RBI data, the banking system liquidity deficit was at 2.09 lakh crore rupees as of Jan 14. So VRR auctions allow RBI to inject liquidity into the banking system when it turns into deficit mode. Right? Moving on. Next is RBI. They have introduced changes to FEMA, that is FEMA, to facilitate cross-border trade in rupees. Correct? What is FEMA? FEMA is your Foreign Exchange Management Act, right? So recently RBI, they have introduced new measures under the FEMA
1999. This will encourage the use of the Indian rupees and other local currencies for the international trade. This move comes as Indian currency is facing depreciation, as we saw in the last topic that almost $1 is now 86.64 rupees, right? This might have changed, but the last that I saw was this much, right? Apart from this, some key changes here, such as your overseas branches of Indian banks can now open INR accounts for individuals or entities outside India. These accounts can be used for permissible current and capital account transaction with Indian residents. Also, non-residents are allowed to settle legitimate transactions with other non-residents using balances in their reputable INR account, and this accounts include special non-resident rupee accounts, special Vostro accounts, and etc. Right? If we talk about this special non-resident rupee account, you can see this is a bank account in India that will allow the individuals and entities that are based outside India to hold funds in the Indian rupees, to hold basically Indian rupees. This was launched. Then any person or entity residing outside India with business interests in India can open this account provided they comply with certain rules and regulations. Then next is your special rupee Vostro account. It was launched by RBI in July 2022 to boost the use of INR for international trade, and this account is held by domestic bank for a foreign bank in the domestic currency. Next is Bank of Baroda. They have launched BOB Liquid FD scheme. So this is a fixed deposit scheme that is an alternative to the traditional fixed deposit, and it has combined the benefits of interest rate with the convenience of easy liquidity of saving account. These depositors can partially withdraw money without having to close the entire fixed deposit. That means if you have a fixed deposit of 1 lakh rupees, then you can partially remove that amount. You can withdraw that amount. Say for example, you can withdraw 10,000 from this FD and rest 90,000 will be still in FD. Next is economy and business. India set to become the world's fourth largest economy by 2026. GDP to grow by 6.8% in FY25 as per PhD CCI. So important takeaway from this topic is that our country will become the fourth largest economy by 2026, and we will surpass which country? We will be surpassing Japan. Also, the report further projected that India's GDP will grow by 6.8% in FY25 and 7.7% in FY26. Right? Also, it is projected that our country, India, will have a GDP of $7 trillion by 2030. Next is FICCI. According to FICCI, India estimated to grow by 6.4% and CPI inflation projected at 4.8% in FY25. So FICCI, that is the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, they have released their economic outlook survey, and in that they projected Indian GDP to be at 6.4% for FY25 and CPI inflation projected at 4.8%. Correct? Take a note of this. Then if we talk about the agriculture sector, it is estimated to grow by 3.6%. Industrial and service sector expected to grow by 6.3% and 7% or 7.3% respectively. That means industrial sector by 6.3% and service sector by 7.3%. Next is science and technology. L&T has launched second multi-purpose vessel INS Utkarsh for Indian Navy. Right, this is your second multi-purpose vessel. Name of this is Indian naval ship Utkarsh. It was launched near Chennai, Tamil Nadu, and this follows just 3 months after the launch of first MPV, that is multi-purpose vessel, that was INS Samarthak. Right, and second multi-purpose vessel is your INS Utkarsh. Correct? Take a note of it. Next, and it is L&T that has launched it. Moving on, next is Google-backed Pixel has launched the first 3 satellites of Firefly constellation. Firefly constellation. What is the constellation? Say this is Earth. So constellation is a group of satellites in the orbit. That is your constellation, right? Satellite constellation. So recently Google, they have successfully launched the first 3 satellites of the Firefly constellation. Firefly constellation, it is the India's first private satellite constellation, and the launch of the first phase of this Pixel commercial satellite constellation, here in this 3 satellites has been launched that you need to remember. They were launched using the SpaceX Transporter 12 mission from Vandenberg Space Force Base in California, USA. And these Fireflies, they are now the world's highest resolution commercial grade hyperspectral satellites, right? And in this constellation, it is expected to launch almost 150 satellites here. Correct? Take a note of it.
Then one more thing, remember, we will talk about SCOT. SCOT is your Space Camera for Object Tracking Mission, right? This was launched successfully by Digantara. Digantara, this is an aerospace company in Bengaluru, Karnataka. It was backed by Aditya Birla Group, and they have successfully launched the Space Camera for Object Tracking Mission. Correct, take a note of this. So it is Google backed Pixel. They have launched the first satellites of this Firefly constellation. Moving on. Next is important is 9th edition of Indian Armed Force Veteran Day was observed on 14th of January. It is celebrated to recognize the service of Field Marshal K.M. Karyappa, the India's first Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces. He retired on this day, that is 14th of January in 1953, and led Indian forces to a victory also in the 1947 war, right? And this year it is the 9th edition of the Indian Armed Force Veteran Day observed. Next, if we talk about KM Karyappa, it is KM Karyappa has joined the British Indian Army in 1919 after the end of World War I and was commissioned as a temporary first lieutenant into the 2x88 Carnatic Infantry. Field Marshal KM Karyappa led Indian forces on the Western Front during the 1947 Indo-Pakistani War. Next, students, is our homework section. First, DeepSeek. What is this and it was launched by which organization and which country? Second question, third edition of the Global Freight Summit. It was held where? Name the location. Third question, tell me recently which country conducted the first national census in 40 years. Name that country. Fourth question, tell me recently which bank has raised 10,000 crore rupees through infrastructure bond issuance? Fifth question, recently who has been appointed as the next CAG, Controller and Auditor General of India, and name the number of also which number of CAG will he be. Then sixth question, tell me recently who has been named as the 73rd Miss Universe, which country she belongs to. Right, so these are your homework questions, students. If you find the session interesting, do hit the like button. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की, जो कि अभी इंडिया में हमें देखने को मिला। सेकेंड लार्जेस्ट ये ऑटोमोटिव एक्सपो था। देन अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा सेटअप किया जाएगा इंडिया का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। देन हम सेटअप करेंगे इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, कहाँ पर होगी? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राइट। देन हम वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, राइट। एंड इन्हीं चीज़ों को ये याद रखेंगे, बहुत बेनिफिट ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज का जो कंटेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना सके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने कजन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, पेरेंट्स सबके साथ शेयर कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अफेयर्स क्लाउड। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes.
A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को। 17 से लेके 22 जनवरी तक 2025 में ये हुआ था, राइट। ये याद रखेंगे, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 ये इंडिया का तो लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपो है, मोबिलिटी एक्सपो है, एंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोबिलिटी एक्सपो है। ये लोकेशन कहाँ पर हुआ था? मेन इवेंट तो इसका भारत मंडपम में देखने को मिला था, न्यू दिल्ली में। लेकिन इसी के अलावा, भारत मंडपम के अलावा, यशोभूमि जो कि द्वारका में है, एंड आपका इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो कि ग्रेटर नोएडा में है, वहां पे भी हमें ये देखने को मिला था। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पर 90 से भी ज़्यादा गाड़ियों को यहाँ पे लॉन्च किया गया इन वेरियस सेगमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, आगे बढ़ने से पहले, एग्जांपल देखने से पहले स्टूडेंट्स एक थीम और याद रखेंगे इस इवेंट की, जो कि है बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन, राइट। यहीं पे अगर हम अब बात करें कुछ गाड़ियों की, जैसे फॉर एग्जांपल पुणे महाराष्ट्र बेस्ड एक कंपनी है वेवी मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा वेवी ईवीए को लॉन्च किया गया है। क्योंकि, और ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये वर्ल्ड इंडिया की पहली सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी, राइट। इसी के अलावा अगर हम देखें, 3 वेरिएंट्स में इसको लॉन्च किया गया है, नोवा, स्टेला एंड वेगा। 3.25 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक की ये रेंज में रहेगी। दूसरी चीज, ईका मोबिलिटी, इनके द्वारा ईका कोच नाम की ये पहली स्टेनलेस स्टील लग्जरी इलेक्ट्रिक बस को यहाँ पे लॉन्च किया गया फॉर लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे हम CZA। CZA क्या है? सेंट्रल जू अथॉरिटी, करेक्ट। ये सेंट्रल जू अथॉरिटी याद रखेंगे, सेंट्रल जू अथॉरिटी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। एंड इनके द्वारा एक प्रपोजल दिया गया है ताकि इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को स्टैब्लिश किया जा सके। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहां पर? रेवा डिस्ट्रिक्ट में। और देखो, जो ये व्हाइट टाइगर्स होते हैं ना, बेसिकली ये आपके बंगाल टाइगर्स होते हैं, बस इनका कलर व्हाइट होता है यहाँ पर, करेक्ट। और ये जो डिसीजन लिया गया CZA के द्वारा ड्यूरिंग द 114th मीटिंग थी इनकी, जो कि न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिली थी, उसके दौरान इसको यहाँ पे डिसीजन लिया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ पर कि जो टाइगर सेंसस हुआ था 2022 में, उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमें टाइगर्स देखने को मिले, फॉलोड बाय कर्नाटका, उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराष्ट्र की स्टूडेंट्स। एंड महाराष्ट्र में अभी सेटअप किया जाएगा इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेगा, जहाँ पे AI के ऊपर हमें रिसर्च होते हुए दिखेंगे, हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती हुई दिखेगी। यहीं पर हम देखेंगे बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी आने वाली टेक्नोलॉजी में, ताकि वो जॉब रेडी हो सके। नॉट जस्ट जॉब रेडी, बल्कि अगर हम उनको स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट रेडी भी हो सकेंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी वो बन सकते हैं, एंड फिर वो बाकी लोगों को भी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फोकस रहेगा AI के ऊपर, रिसर्च का, इनोवेशन का, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। और इस AI यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के लिए एक टास्क फोर्स एस्टेब्लिश की गई है। उस टास्क फोर्स को हेड कौन करेगा? उस टास्क फोर्स को हेड किया जाएगा पराग जैन के द्वारा, राइट। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ऑफ IT ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्ब्स टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2025 की। यहाँ पे अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टॉप किया, चाइना सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, रशिया थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, एंड हमारे कंट्री इंडिया यहाँ पे 12th पोजीशन पे आ जाता है अगर हम मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की बात करें। ये डाटा रिलीज किसके द्वारा किया गया? ये रिपोर्ट को रिलीज किसके द्वारा किया गया? फोर्ब्स के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहीं पे अगर आप देख सकते हैं, फर्स्ट पे USA विद 30.34 ट्रिलियन, देन GDP रहेगी इनकी। सेकंड पे चाइना विद 19.53 ट्रिलियन GDP, थर्ड पे रशिया विद 2.2 ट्रिलियन, UK फोर्थ पर 3.73 ट्रिलियन एंड सो ऑन। एंड हमारे 12th पोजीशन पे आ जाता है इंडिया 4.27 ट्रिलियन। लेकिन यहीं पे एक इंटरेस्टिंग डाटा याद रखेंगे, अगर हम इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल GDP की बात करें तो इंडिया 5th स्पॉट पर यहाँ पे हमें दिखता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया टॉप्स ग्लोबल लिस्ट इन पैसेंजर लोड्स ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय IATA। अब ये IATA क्या है? IATA है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? मॉन्ट्रियल, कनाडा में, राइट। इनके द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया अबाउट द पैसेंजर लोड फैक्टर, जो हमारी कंट्री इंडिया का पैसेंजर लोड फैक्टर आ जाता है 86.5
4% का, राइट। ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि इंडिया में जो लोड है वो ज़्यादा है, ज़्यादा लोग यहाँ पे एयर ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मोड है जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह पे क्विकेस्ट वे में पहुंच जाएंगे। इवन अब तो स्पेस ट्रैवल की बात की जा रही है, जो बताता है, जो स्पेस एक्स के द्वारा की जा रही है, एलॉन मस्क के द्वारा, जो कह रहे हैं अगर आपको दिल्ली से लंदन तक जाना है ना, आप सिर्फ 1 से 2 घंटे में यहाँ पे पहुंच जाएंगे यूजिंग स्पेस ट्रैवल, राइट, रॉकेट की मदद से, जो अपने रॉकेट्स बना रहे हैं उनकी मदद से, राइट। तो इंडिया ने टॉप किया ग्लोबल लिस्ट में इन द पैसेंजर लोड्स ऑन द डोमेस्टिक फ्लाइट्स, फॉलोड बाय यूएसए ऑन सेकंड पोजीशन एंड चाइना ऑन थर्ड पोजीशन। मतलब इंडिया में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उन पे जो पैसेंजर लोड है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। अभी कुछ कंट्रीज ने इकोवास से अपना एग्जिट कर लिया है। ये क्या है? ये है आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो इकोवास से अभी एग्जिट किया है किन्होंने? माली कंट्री ने, बुर्किना फासो ने एंड नाइजर के द्वारा यहाँ पे हमें एग्जिट होता हुआ दिखा है, राइट। ये बेसिकली क्या था, इनके कुछ रूल्स आए थे इकोवास के द्वारा, जो कि गाइडलाइंस इनके द्वारा फॉलो करने से इन्होंने मना कर दिया था, एंड इन्होंने फिर अब एग्जिट की बात करी है। अभी 12 कंट्रीज बची हैं। इकोवास ने बोला है 12 कंट्रीज इन 3 कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकती है, इनके जो पासपोर्ट है उनको ये अच्छे से रिकॉग्नाइज भी करेंगे, बट स्टिल ये एग्जिट कर चुके हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा, राइट। इनके द्वारा भी लॉन्च किया गया सेंसेक्स एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को। कहाँ लॉन्च किया गया? इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पर। कहाँ पर? जिफ्ट सिटी में। जिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात में, राइट। इससे क्या होगा, ईजिली यहाँ पर जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, राइट, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर बेसिकली डॉलर्स में ट्रेड कर पाएंगे, करेक्ट, विदाउट उनको, मतलब डायरेक्टली जो बीएससी डेरिवेटिव्स हैं, राइट, उसमें यूजिंग डॉलर वो ट्रेड कर पाएंगे, उनको इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई रिपीट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक तो 22 घंटे चलेगा पूरे दिन में, एंड यहाँ पे जो न्यू ऑफरिंग है ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ करेगी टू ट्रेड एंड सेटल द बीएससी डेरिवेटिव्स इन यूएस डॉलर्स, जिससे क्या होगा, जो ग्लोबल ट्रेडर्स हैं इन्वेस्टर्स का, उनका रुझान इंडिया की तरफ आएगा, एज वेल एज यहाँ पर हमें जो करेंसी कन्वर्जन रिस्क है ना, उससे भी उनको यहाँ पे डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनआरआईज को यहाँ पे पैन नंबर की भी, पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो यहाँ पर ट्रेड करते हैं यूजिंग द यूएस डॉलर इन दीज बीएससी डेरिवेटिव्स, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने अभी पेनल्टी इंपोज करी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड आईपीपीबी, जो कि है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर, बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। ईएसएफ या फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 65 लाख रुपीज़ की पेनल्टी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर 26.7 लाख रुपीज़ की पेनल्टी, एंड इसी के अलावा आरबीआई ने 3.1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी भी इंपोज करी है चेन्नई बेस्ड एप्टस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने अभी प्रपोज किया एक नया प्रोडक्ट जो कि म्यूचुअल फंड एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस को जोड़ देता है। इससे क्या होगा, जो रूरल एरियाज में एसआईपी है ना, उसमें हमें बढ़ावा होता हुआ दिखेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड का भी बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर आपको, एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और ये जो नया प्रोडक्ट है ये मधाबीपुरी बख्श जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि चेयरपर्सन है सेबी की। नेक्स्ट क्रिसिल की बात करते हैं। क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है एंड इनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया कि जो इंडिया की जीडीपी है फॉर FY26 वो 6.5% से यहाँ पे ग्रो करती हुई हमें दिखेगी, एंड जो करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा वो 1.3% रहेगा इन FY26, जो कि अभी 1% है इन FY25, जो कि बढ़ के 1.3% हो जाएगा, राइट। ये क्यों हो जाएगा? बिकॉज यूएसए में अभी हम देख रहे हैं इन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज पर ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है, एंड आने वाले टाइम में बहुत चांस है कि यू नेवर नो क्या सिचुएशन आ सकती है। इवन आप देख रहे हैं अभी कनाडा पे, मैक्सिको पे, चाइना पे ट्रम्प के द्वारा यहाँ पे ट्रेड वॉर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। इवन आप देखेंगे इंडिया के जो इलीगल माइग्रेंट्स थे जो यूएसए में गए थे, अब उनको वापस लाया जा रहा है, एंड जो पहला फ्लाइट यूएसए से इलीगल माइग्रेंट्स का इंडिया में आएगा वो अमृतसर पंजाब में लैंड करने वाला है, कल लैंड हो जाएगा वो, राइट। इससे हम देखेंगे काफ़ी सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो इंडिया से डंकी मार के या किसी भी इलीगल तरीके से बाहर गए थे, यूएसए में गए थे, अब उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें चेंजेस इकोनॉमी में देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टैक्स बर्डन आ सकता है, काफ़ी सारी अलग प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी हब एंड ITFA, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया ताकि इंडिया एंड टर्की के जो ट्रेड एंड कल्चरल टाइज हैं उसको हम बढ़ावा दे सकें। देखो टी हब क्या है? टेक्नोलॉजी हब। ये कहाँ पर है? तेलंगाना में, राइट, तेलंगाना
हैदराबाद में। इन्होंने ये एमओयू साइन किया इंडिया टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन के साथ, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ सके। एक चीज़ याद रखेंगे, इंडिया और टर्की के बीच में लास्ट ईयर ऑलमोस्ट $13 बिलियन का यहाँ पर हमें ट्रेड होता हुआ दिखा है 2024 में, राइट। एंड फर्दर हम कैसे एक दूसरे की कंट्रीज में, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, कैसे इनके साथ मिलके कैसे टेक्नोलॉजी को सॉफ्टवेयर डेवलप करके कैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं, कैसे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर सकते हैं दोनों कंट्रीज। इसीलिए ये एमओयू हमें साइन होता हुआ दिखा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है साउथ अफ्रीकन मॉडल जो कि है शियोगा गैलिया, राइट। ये 40th एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड टाइटल की विजेता है एंड ये पहली साउथ अफ्रीकन ब्लैक वीमेन बनी जिनको जिन्होंने इस टाइटल को जीता है। ये 33 साल की मॉडल है एंड इन्होंने हिस्ट्री रच दिया यहाँ पे, पहली ब्लैक साउथ अफ्रीकन वीमेन जिन्होंने 40th एडिशन ऑफ मिसेस वर्ल्ड टाइटल 2025 को जीता। इसका जो इवेंट था लॉस वेगास में हुआ था यूएसए में एंड रनर अप रही यहाँ पे इशादी अमेंडा जो कि श्रीलंका की है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लेमिश नेशनलिस्ट बार्ट एल्बर्ट लिलियन दे वर्नर, राइट। इनको स्वॉन इन किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे अलेक्जेंडर दे क्रू को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी इंडियन रेलवेज के द्वारा स्टूडेंट्स एक सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया फॉर बीटा टेस्टिंग जो कि है स्वारेल। ये एक सुपर एप्लीकेशन है जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। इंडियन रेलवेज की जो भी सर्विसेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी इस स्वारेल एप्लीकेशन पे। इसको डेवलप किया गया है CRIS के द्वारा जो कि है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के द्वारा, ताकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंप्रूव किया जा सके एज वेल एज जो रेलवे से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके। ये आपके गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स। अभी 2 नई स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं कार्डेमम की। कहां पर? वेस्टर्न घाट में, स्पेसिफिकली इन केरला ये 2 नई स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं इस कार्डेमम की। क्या नाम है इन स्पीशीज का? एलेटेरिया फेसिफेरा एंड एलेटेरिया ट्यूलिपिया फेरा। ये 2 स्पीशीज हैं जो अभी डिस्कवर की गई हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिट्री पे ऊपर स्टूडेंट्स। नवीन चावला जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, 79 की एज में इनका निधन हो गया। नवीन चावला जी का 1945 न्यू दिल्ली में इनका जन्म हुआ था एंड 1969 बैच के ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी, कैडा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी को। पहली बार इसको 2000 में ऑब्जर्व किया गया था एंड कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उसके प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे आप पिंक रिबन देख सकते हैं, ये सिंबल है बेसिकली आपका कैंसर अवेयरनेस का एंड इसी की एक थीम याद रखेंगे 2025 से 2027 तक यही थीम फॉलो होगी, यूनाइटेड बाय यूनिक। तो दोस्तों ये था हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने इशू की ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें, इनके द्वारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। इनके द्वारा यहाँ पर हम देखेंगे कि नए इक्विपमेंट्स आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया UI देखने को मिलेगा, राइट। बेटर ईज हो जाएगी, राइट, जिससे आप यहाँ पे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर सोलर पैनल्स अपने छतों पे, घर पे लगा सकें, राइट। कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। इससे आपको जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आप जनरेट करेंगे ना, सिर्फ आपको, राइट, या फिर जो कंज्यूम करेंगे ना, आपको सिर्फ उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे करना है, उसके अलावा आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। आपको अगर आप एक्स्ट्रा जनरेट कर लेते हैं तो वो आपकी स्टोर हो जाएगी, राइट। उसको आप फर्दर आगे यूज़ कर सकते हैं एंड मैनी बेनिफिट्स होते हैं सोलर पैनल के लगाने के। अगर मैं सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करूं, इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था फेब 2024 में। 75,021 करोड़ रुपए की लागत से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था एंड 300 यूनिट हर महीना यहाँ पे बिजली फ्री प्रोवाइड कराने की बात की गई अंडर द स्कीम टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया बाय मार्च 2027। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, राइट। ये जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, इंडियन नेवी को डिप्लॉय की जाएंगी। INS, कई सारे जो INS है इंडियन नेवल शिप, उनमें इनको डिप्लॉय किया जाएगा। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया वर्थ
60 करोड़ रुपीज़, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें इस सिस्टम को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया गया है बाय डीआरडीओ एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा मिलकर विद वेरियस एमएसएमईज का पार्टिसिपेशन। इट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन वेरियस इंडियन नेवल शिप्स एंड इंटीग्रेटेड इनटू द अपकमिंग नेवल प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया एटॉमिक एनर्जी कमीशन को विद अजीत कुमार मोहाटी एज देयर चेयरमैन, राइट। तो यहाँ पे जो एईसी है एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेटअप की गई है, इनके चेयरमैन कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है अजीत कुमार मोहाटी। एईसी, राइट, ये कमीशन बेसिकली सेटअप की गई है ताकि जो एटॉमिक एनर्जी पे डिसीजंस लेने हैं वो इनके द्वारा लिए जाए, राइट। जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो इनके द्वारा आएंगी एंड उसके लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी प्रोसेस है उसका ये ध्यान रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने अभी DSCI जो कि है, DSCI क्या है, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलकर अभी लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0, राइट। इससे क्या है, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, राइट, एंड डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, डिजिटल युग बढ़ता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए नए प्रोसेसेस आ रही हैं, राइट। इवन हम देखेंगे अभी गूगल के द्वारा एक क्वांटम चिप को भी लॉन्च किया गया, राइट, जिसका नाम है विलो। एंड ये इतनी ज़्यादा पावरफुल चिप, बताइए इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है कि जो बिटकॉइन बोला जाता था कि जो हैक प्रूफ है, अब उसको भी यहाँ पे विलो के द्वारा इजीली हैक किया जा सकता है एंड ये लॉन्च की गई है गूगल के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, राइट। तो इतनी अनसर्टेनिटीज़ में इतनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उनको हमें अपने डाटा को भी तो सेफ रखना है कंपनीज़ को, तो उनको साइबर सिक्योरिटी में माहिर बनाने के लिए, स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, राइट, नए सिक्योरिटी सिस्टम्स डेवलप करने के लिए यह भी पार्टनरशिप थी और इसी के लिए ये चैलेंज यहाँ पे लॉन्च किया गया कि जो टीम्स आएँ, ऑलमोस्ट 36 स्टार्टअप्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं पार्टिसिपेट करेंगे, 6 प्रॉब्लम एरियाज़ रहेंगी एंड वहाँ पे जो विनर रहेगा उनको पैसे भी मिलेंगे एज अ रिवॉर्ड, एज वेल एज उनको मेंटरशिप भी मिलेगी ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को आगे कैरी आउट कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं C. इन्होंने पार्टनर किया IIT दिल्ली के साथ टू डेवलप द टेट्राहर्ट्ज कम्युनिकेशन फ्रंट एंड्स फॉर द 6G टेक्नोलॉजी, राइट। तो 6G टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, देखो घर में आप देखते होंगे जब आप वाईफाई लगाते हैं तो आपका जो प्रोवाइडर है वो कहता है कि सर 100 Mbps स्पीड आती है, 200 Mbps स्पीड आती है, राइट। तो ऐसे 6G जो होती है वो बहुत Gbps में यहाँ पे स्पीड हमें देखने को मिलती है, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है ये एंड इसी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए फॉर टेट्राहेड्स कम्युनिकेशन फ्रंट्स एंड फॉर 6G ये भी हमें पार्टनरशिप होती हुई देखी। नेक्स्ट आ जाते हैं, चाइना वर्ल्ड का पहला 300 मेगावाट का CAES जो कि है कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट डेवलप कर रहा है कनेक्टेड टू ग्रिड एट फुल कैपेसिटी, राइट। ये कहाँ पर, सेंट्रल चाइना की हुबेन प्रोविंस में बनाया जाएगा। ये वर्ल्ड का पहला फुल ग्रीन नॉन सप्लीमेंट्री कंबशन प्रोजेक्ट रहेगा जो कि चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, नहीं, और इसका नाम क्या रहेगा, नेंगचू 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने डिसाइड किया टू कंडक्ट डेली VRR ऑपरेशंस टू बूस्ट बैंकिंग। देखो दो टर्म्स होती हैं, VRR एंड CRR। VRR होता है वेरिएबल रेपो रेट एंड CRR होता है कैश रिजर्व रेशो। वेरिएबल रेपो रेट होता है बेसिकली एक मीडियम की तरह एक्ट करता है जब हमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में लानी हो। इससे क्या होता है, RBI अलाउ करता है बैंक्स को कि जो रेपो रेट है, राइट, उससे लोअर यहाँ पे मार्केट से बैंक पैसा उठा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज तक ये रहता है। एंड कैश रिजर्व रेशो होता है कि RBI मैंडेट करता है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो अगर मान लो 100 रुपये हैं उनके पास बैंक में कैश में, तो उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ वो कैश की फॉर्मेट में रखें, बाकी वो लोन दे सकते हैं। तो इससे जो क्या होता है, मार्केट में बूस्ट देखते हैं। अभी हमें थोड़ा टाइम पहले देखा था कि CRR भी कम कर दिया गया था। उसका एम क्या था कि बैंक्स ज़्यादा लोन ले सके कम रेट पर RBI से एंड फर्दर लोगों को वो लोन प्रोवाइड करा सकें ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, राइट। लोगों को जो लोन चाहिए वो उनको मिल सके, अपनी काम पूरा हो सके। तो बेसिकली बैंकिंग में लिक्विडिटी एंड डेफिसिट को बूस्ट देने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था। रीजन बीइंग इसका अगर VRR का हम देखें, ये क्या था कि द बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट वाज एट 2.09 लाख करोड़ रुपीस एज ऑफ January 14। सो VRR ऑप्शंस ये अलाउ करते हैं RBI को टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम व्हेन इट टर्न्स इनटू डेफिसिट मोड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है RBI ने अभी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं FEMA एक्ट को ऑफ 1999 टू फैसिलिटेट द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन इंडियन रुपीस, राइट। इससे क्या होगा, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट,
इससे क्या होगा बेसिकली, ये जो नए चेंजेस आए ना, इससे जो इंडियन करेंसी जो डेप्रिसिएशन फेस कर रही है ना, उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब रुकता हुआ वो देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो $1 अभी ऑलमोस्ट 86.64 रुपीज़ था जो मैंने लास्ट चेक किया था। अब ये इससे ऊपर भी हो सकता है, करेक्ट। तो इतना पहुंच गया था, तो हमारी करेंसी बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट होती हुई देखी है हमें पिछले कुछ महीने में, राइट। इसका इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हो सकता है, डॉलर स्ट्रेंथनिंग भी हो सकता है, राइट। अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन रहे हैं, इलॉन मस्क उनके साथ हैं, राइट। तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उनके द्वारा लिए गए हैं। एंड अगर हम इंडिया का भी देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से अपना पैसा पुल कर रहे हैं, राइट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमें कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखा इंडिया में। हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो 2% तक ग्रोथ देखने को मिली। ईवी सेक्टर इंडिया में इतनी तरीके से बूम नहीं कर रहा है बिकॉज ओला का आपने हाल देखा, राइट। इवन चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे ये प्ले कर रहे हैं। एंड लेट्स सी हाउ द फ्यूचर होल्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर यहीं पे याद रखेंगे कई चेंजेस जो आए हैं जैसे ओवरसीज ब्रांचेस की, राइट। इसमें क्या होगा, इंडियन बैंक्स नाउ कैन नाउ ओपन INR अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स और एंटिटीज आउटसाइड इंडिया। नॉन रेजिडेंट्स को अलाउ है टू सेटल द लेजिटिमेटेड ट्रांजैक्शन विद अदर नॉन रेजिडेंट यूजिंग द बैलेंसेज इन देयर रेपुटेबल INR अकाउंट। इसके लिए 2 अकाउंट्स खोले गए हैं, एक है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपये अकाउंट और दूसरा है स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट। अगर मैं स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपये अकाउंट की बात करूं तो ये अलाउ करता है इन दिस इज अ बैंक अकाउंट इन इंडिया जो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को एंड एंटिटीज को बेस्ड आउटसाइड इंडिया टू होल्ड फंड्स इन इंडियन रुपीज। एंड एनी पर्सन और एंटिटी रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया विद बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया कैन नाउ ओपन दिस अकाउंट प्रोवाइडेड दे कैन कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। वहीं पे अगर मैं बात करूँ स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट की, ये 2022 जुलाई में लॉन्च किया गया था टू बूस्ट द इंडियन रुपी का यूज इन द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। एंड ये बेसिकली क्या है, दिस अकाउंट इज हेल्ड बाय अ डोमेस्टिक बैंक फॉर अ फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक करेंसी, उनकी करेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। इन्होंने एक लिक्विड FD लॉन्च किया, फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिसका नाम है बॉब लिक्विड FD स्कीम। ये एक ऑल्टरनेटिव रहेगी टू द ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट। पहले क्या होता था, मान लो 1 लाख रुपए की आपने फिक्स डिपॉजिट कराई, तो जब आपको अगर मान लो इसमें से पैसा निकालना है तो ये आपको पूरी FD तोड़नी पड़ती थी। ये जो लिक्विड FD है BOB लिक्विड FD, इसमें क्या होगा, मान लो 1 लाख की FD कराई और आपको 10,000 रुपये की जरूरत है तो आप 10,000 रुपये निकाल लो, बाकी 90,000 रुपये की आपकी फिक्स डिपॉजिट रहेगी, राइट। तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। इंडिया अभी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है 2026 में। इंडिया सरपास कर देगा जापान को, राइट। एंड एक्सपेक्टेड है कि इंडिया 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, राइट। ये भी नोट करके चलेंगे, करेक्ट। वहीं पे अगर हम देखें FY25 एंड FY26 में इंडिया की ग्रोथ, FY25 में इंडिया एक्सपेक्टेड है 6.8% से ग्रो करेगा एंड FY26 में 7.7% से यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखेगा। चलिए इन्फ्लेशन की बात करें तो FY25 में 4.5%, FY26 में एक्सपेक्टेड है 4% से अबव इन्फ्लेशन रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिकी के द्वारा भी अभी इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्ट की गई एट 6.4% इन FY25 एंड जो CPI है इट इज़ प्रोजेक्टेड एट 4.8%। यहीं पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो यहाँ पे 3.6% की ग्रोथ दिखी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें 6.3% की, सर्विस सेक्टर की बात करें 7.3% की ग्रोथ दिखी। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। L&T के द्वारा भी दूसरा मल्टीपर्पज़ वेसल्स यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसका नाम है INS उत्कर्ष फॉर द इंडियन नेवी, राइट। मार्क करके चलेंगे, ये सेकंड पर्पज़ वेसल है INS उत्कर्ष। पहला मल्टीपर्पज़ वेसल क्या नाम था उसका, INS समर्थक, राइट। ये पहला था और अब ये दूसरा INS उत्कर्ष यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं गूगल बैक्ड पिक्सल कंपनी। इनके द्वारा पहली 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई आपकी फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन की। कॉन्स्टलेशन होता है बेसिकली अर्थ के चारों तरफ यहाँ पे ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन रहता है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे स्टारलिंक बना रहा है एलन मस्क की कंपनी, राइट, टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन इवन इन द रिमोट एरिया, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए। तो यहीं पे पिक्सल इन्होंने भी पहली 3 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं ऑफ दिस फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट एंड इसको स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया USA।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। 9वां इंडियन आर्म फोर्स वेटरन डे ऑब्जर्व किया गया 14 जनवरी को। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली टू मार्क द एंड टू ऑनर एंड रिकॉग्नाइज जो फील्ड मार्शल थे एम करियप्पा, राइट। इनको ऑनर करने के लिए, जो कि इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ थे ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये 14 जनवरी को 1953 में रिटायर हुए थे। 1947 की इंडिया में वॉर थी जो, राइट, उसमें भी यहाँ पे विक्टोरियस इन्होंने इंडिया को कराया था। एंड इस बार हमने 9वां एडिशन इसका ऑब्जर्व किया है ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स वेटरन डे। नेक्स्ट आ जाते हैं के एम करियप्पा की बात करें। जॉइंड द ब्रिटिश आर्मी इन 1919 आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वॉज कमीशन एज अ टेम्परेरी फर्स्ट लेफ्टिनेंट इन टू द 2/88 कार्नेटिक इन्फेंट्री। Next, students, is our homework section. First, Deep Seek. What is this and it was launched by which organization and which country? Second question, third edition of the Global Fright Summit. It was held where? Name the location. Third question, tell me recently which country conducted the first national census in 40 years. Name that country. Fourth question, tell me recently which bank has raised 10,000 crore rupees through infrastructure bond issuance. Fifth question, recently who has been appointed as the next CAG, Controller and Auditor General of India, and name the number of also which number of CAG will he be. Then sixth question, tell me recently who has been named as the 73rd Miss Universe. Which country she belongs to. Right? So these are your homework questions, students. If you find the session interesting, do hit the like button.